अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना ख़्याल भी रख रहे होंगे। आज प्राइम टाइम के एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। इस सिलसिले को शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइन्स जो मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके लिए भी पेश करना चाहूँगी। मुझे शेरो शायरी कुछ ख़ास अच्छी नहीं आती मगर फिर भी कोशिश करूँगी तो आप सुन लीजिएगा। हाफ़िज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली, हाफ़िज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली, ना उर्दू, ना हिंदी, ना हिंदुस्तानी। हफ़ीज़ जलंधरी साहब का ये इरशाद है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी हम गुफ्तगू करते हैं, तो हम अपने आप को एक हिस्से में बाँट लेते हैं। मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं पंजाबी बोलता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, मैं कश्मीरी, डोगरी जो भी। मगर जब दिलों से आवाज़ निकले, दिलों से बात निकले, तो पुरअमन बातचीत होती है, लुत्फ़अंदोज़ बातचीत होती है और हिंदुस्तानी हमारी ज़ुबान है, जिसमें हम दिल से बात करते हैं। आज का जो मौजू है इंटर रिलीजियस हार्मनी वे फॉरवर्ड टू पीस, इसमें भी दो शेर मुझे याद आते हैं। अल्लामा इकबाल का एक था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हमारे यहाँ पे ये हर बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है। किस हद तक हमारी जिंदगियां इसके इर्द गिर्द चल रही हैं, उसी पे चरण सिंह बशर साहब का एक और शेर, एक कलाम मुझे याद आता है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, सुनिएगा जरूर। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये मोहब्बत, ये पीस, ये अमनचारा, ये भाईचारा कैसे बढ़ेगा? इसी के सिलसिले में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज न्यू दिल्ली ने पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की पंजाब में, और इस साल 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस भिवांडी महाराष्ट्र में हो रही है, मुंबई में हो रही है। उसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ स्क्रीन पे जो आए हैं, मैं उनको दावत देना चाहूँगी और उनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनने क्या डिस्कस किया, क्या पाया और क्या ज़रूरत है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की। अस्सलाम वालेकुम प्रोफ़ेसर हमीद नसीम रफ़ियाबादी साहब, डायरेक्टर रिलिजियस स्टडीज़, कश्मीर यूनिवर्सिटी। आपकी माइक शायद से म्यूट है। जी, जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका खैर मकदम है सर। जी, जी, जी। जी। डॉक्टर कॉनरेड नोराना सॉरी, मुंबई के डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर पास्टरल मैनेजमेंट और सेंटर ऑफ सेफगार्डिंग वुमेन, जीएम मोमेन वुमेन्स कॉलेज भिवांडी मुंबई। सर आपका भी खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। प्रोफेसर डॉक्टर तबस्सुम शेख, एचओडी फिलॉसफी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलिएटेड कॉलेज है। मैम आपका भी खैर मकदम है। और प्रोफेसर अमिता वाल्मीकि, प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी अगेन मुंबई यूनिवर्सिटी से। आप सभी लोगों का खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। किया है तो आप हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग कॉन्फ्रेंस में हैं और बहुत शोर भी है क्योंकि होटल कॉन्फ्रेंस और बहुत से लोग आपसे मिलने भी आए होंगे, मीडिया के भी अटेंडीज भी। तो मैं एक-एक करके आपके माइक्स ऑन करूँगी क्योंकि आवाज़ में बहुत ज़्यादा पीछे शोर है। तो इस प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, प्रोफ़ेसर हमीद नसीम रफ़ियाबादी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस प्रोग्राम के हवाले से कि ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का आपने ऑर्गेनाइज़ किया, पहले शायद पंजाब में पिछले साल हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, इंटर रिलिजियस हार्मनी के बारे में ही बात करते हुए। आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है, कैसी रही? और आप लोगों का जो ये एजेंडा है, इसके बारे में भी आप हमें कुछ बताइए। थैंक यू वेरी वेरी मच सुनील जी। ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस भिवांडी के वुमेन कॉलेज में हो रही है, जो वुमेन्स कॉलेज है, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज न्यू दिल्ली और भिवांडी के वुमेन कॉलेज फॉर वुमेन में हो रहा है। और इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक जो है वो है रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग और प्रमोटिंग पीस। तो उसमें जो है बहुत सारे मज़ाहिब के लोग आए हैं, और ख़ास तौर से अहम इसका फीचर जो है श्री रवि रवि शंकर का इनॉग्रल स्पीच था सुबह।
और उन्होंने इतना ज़बरदस्त स्पीच दिया, और अपनी स्पीच में उन्होंने ये बात कही कि ये ज़िंदगी थोड़े दिनों की है, इसको हमें अमन के साथ और प्यार के साथ गुजारना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, और मज़हब का जो है गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वो बड़ी ताकीद की। जी, जी। तो और इसके अलावा फिर इसमें तकरीबन हमारे जितने मज़ाहिब है, सबके मज़ाहिब के स्कॉलर्स ने तशरीफ़ लाया। जैसे आपने कमाल साहब का नाम सुना, ये प्रोफ़ेसर है और ये क्रिश्चियनिटी को बिलॉन्ग करते हैं और बहुत ही अहम एक्टिविस्ट भी है। और इस तरह से आपने वाल्मीकि साहिबा को देखा, तो वाल्मीकि साहिबा एक हिंदू स्कॉलर भी है और फिलॉसफर भी है और एक्टिविस्ट भी है, पीस एक्टिविस्ट भी है। और इसी तरह से जो हमारे पास परमवीर सिंह साहब आए थे पंजाब से, उन्होंने अपना पेपर पढ़ा, तो वो इनॉग्रल सेशन में भी आए थे। और फिर एक जो है मलेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर इम्तियाज साहब आए थे, उन्होंने बुद्धिज्म के मौजू पर और इस्लाम के मौजू पर एक बहुत ही अच्छा मजमून पेश किया। और फिर बहुत सारे पेपर्स आज पढ़े गए और कल भी पढ़े जाएंगे। उन तमाम पेपर्स का खुलासा यही था कि हमें मज़ाहिब के दरमियान भी मफाहमत पैदा करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि दुनिया में पीस कायम हो जाए और आपस में हम लोग मुकालमा करें, और ये क्लैश का जो माहौल है उसको हमें दूर करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। और इंसानियत की खदमत इसी तरह हो सकती है कि हम मज़हबों के दरमियान भी मुकालमा शुरू करें, डायलॉग शुरू करें, क्योंकि मज़हब जो है पीस पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त मज़हब का मिसयूज हो रहा है, और जिसकी वजह से मज़हब अमन पैदा करने के बजाय बहुत लोग उसको अमन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये इसका खास मौजू था, और ये उसी की कड़ी है जो हमने पहले पंजाब में प्रोग्राम किया था, उसी की दूसरी कड़ी ये थी आज। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कॉनराड नोराना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब हम मज़हब की बात कर रहे हैं, जहाँ तक हमारी समझ में आता है, हर एक किताब, हर एक मज़हब पीस के बारे में ही बात कर रहा है, हार्मनी के बारे में बात करता है, रिस्पेक्ट के बारे में बात करता है। और जैसे प्रोफ़ेसर साहब कर रहे हैं कि इस वक़्त हमारी जो सूरत-ए-हाल है, हमें ऐसे लोग बातें डायलॉग्स के थ्रू शेयर करनी चाहिए, एक-दूसरे को समझाना चाहिए। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस करंट सिचुएशन एंड रिलिजियस पीस? Harmony is something which is really important for all of us to understand in a country as large, as diverse, and as multicultural as India. We do not see it as much in the Western world. In our country, the richness of our country is its diversity and multiculturalism. What we need to understand when we are thinking about multiculturalism and diversity is that there is always the other. The other brings in difference, but the other also brings in the element that we need to understand each other. We cannot say that the other is just different and then push the person out of the picture. Understanding that there are differences and that we work with the differences is really important, and it is a strength. I would love to see the map of India, which has got multiple colors, like we celebrated Holi yesterday. That is something which is beautiful. I also like to point out my kurta, which I wore today. It has got all these little colors over here. There's a number of colors over here on this kurta, which Green, signifies which maroon, yellow. signifies Yeah. which signifies the richness of a country like ours. I would also like to emphasize another point with regard to richness and diversity, which sometimes we forget when we talk about development. Richness and diversity also includes the environment. The environment is people in environment. So therefore, giving jobs, giving employment, and helping people come together is the beauty of what is expected of people who live together and to build harmony. Now, what do we need for this? What we need for this is dialogue, so that differences could be understood, and differences could be understood not from the point of separating people, but differences could be understood from the point of understanding where that person comes. Religion is beautiful. All religions talk about peace. Even where there appears to be war, the war that is being talked about is the spiritual and the internal dynamism which happens between individuals, where they look at how they can connect with their God and what is required for connecting with others and with the environment. So in that sense, harmony is the bringing together of people, and the unity in diversity
is the strength of our country. Correct. When we talk about unity in diversity, Professor Conrad, we also talk about religious harmony, we talk about coexistence, we talk about discussing dialogues. And at the same time, we talk about the philosophy of life. Everybody is talking about philosophy of life कि जिंदगी जीने का सलीका तरीका क्या है. प्रोफेसर साहिबा, अमिता वाल्मीकि साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आप फिलॉसफी की प्रोफेसर हैं और आप बच्चों को पढ़ाती हैं कि चाहे हम लाइफ की बात कर रहे हैं, चाहे हम कल्चर की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हर एक जगह पर फिलॉसफी की बात होती है। सबसे पहले क्योंकि हम लोग हर रिलिजन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो आप हिंदू धर्म से आपकी वाबस्तगी है, तो आप अपने धर्म का पक्ष रखते हुए भी बताइए और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या है? See, the most important part, first of all, salam, and this is a great honor that I'm being invited to talk in this particular news session. My point of view, especially in connection to this particular conference, and born and brought up in a Hindu family, I was nurtured in a bhakti culture. My mother was a Bhakti Margin, and Bhakti Margin is always the follower of diverse sects which are incorporated in their lives. It is intra and faith dialogue that never emphasized on monologue. So most important aspect for my mother, and that came into me, you can say that what I have inherited from her, is that we need to have this dialogue. We cannot go on with monologue. If we want to survive as a civilization, as a human race, dialogue is must. And in dialogue, you have participation. This is the philosophy of life. As Dr. Conrad said, that we need to think about the others. The others are not separate from me. So like Martin Buber, the great German philosopher, who emphasized on the concept of I and thou, which is not just mentioning the thou, that is the other you are incorporating, not the ultimate only. So you incorporate in your own life the others and let them participate in you. And this conference has been a whistleblower, it has been a gate crasher. Now these terms are usually taken negative, but for this conference, I'm taking these terms as positive because it has really opened up the minds of the people that think aloud, having a dialogue with people. You can't live in a cocoon and say that you are the best or your religion is the best. You have to incorporate others. And this is what the Sufi or the Bhakti or all theistic mysticism, the path of theistic mysticism is taught. And this is what I feel is the best the conference has built up. When we talk about Hinduism, we call it as Sanatan Dharma, right? Yeah. वो भी एक philosophy peace है, harmony है, coexistence है, जहाँ पे सनातन धर्म कहता है कि जितने भी लोग आपके पास हैं, जीव जंतु, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। तो हम हर एक के माध्यम से यही कहते हैं कि जब हम जीव जंतु की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरे धर्म के इंसान की भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। यही सवाल I'll ask Father also, I'll ask Professor Hamid Naseem also. So what do you want to add to this? I think all the dharmas are Sanatan. There are, as a philosopher Bowker says, that there are many religions, but religion is one. So we have to concentrate on that aspect, essential aspect. हमें core पकड़ना है of religion. We can't say that my religion is different from yours. In a way, religions are different from rituals, and religions are different in matter of rites and rituals or ceremonies. But in matter of moral concern, all religions are the same. So all religions are ultimately converging to one point, and that is the ultimate realization. That can be self-realization, soul realization, or Brahman realization, or Atman realization. And therefore, all religions are Sanatan. And you can't claim that only your religion is the best. Exactly. That is exactly what everybody is trying to say, that every religion is the best. I'll get back to you in a while. Professor Conrad, I would want to speak to you. आपसे बात करना चाहूंगी, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी. I hope Hindustani convenient है, जैसे मैंने प्रोग्राम Yes, quite all right. Yes. Only I can't speak as fast as you.
No, I speak fast no matter what. I was born without a break. I'm sorry for that. So, talking about religion, harmony and peace, जब हम किसी भी मजहब की बात करते हैं, अगेन कोएग्जिस्टेंस की बात है, रिस्पेक्ट की बात है। जब हर एक किताब, चाहे वो बाइबल हो, ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, हर एक किताब पीस के बारे में बात करती है। हर एक इंसान इस सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहता है। हर एक शख्स चाहता है कि डेवलपमेंट हो। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमारे देश की बात करें, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे घर की बात करें, हमारे पड़ोस की बात करें, everybody has to depend on the other person, interdependability रहती है। How will that be achieved? आप लोगों ने इसके बारे में भी बात किया है अपने कॉन्फ्रेंस में? Yes, well, we still have one more day of the conference to go, in which one of the topics is education. We have not reached that point of education. Today, the focus was more on Indic and religions which came out of the Jewish, the Islam, and the Christian traditions. But tomorrow we'll be talking a lot about the education aspect. But before I go into that, I'd like to make just 2 points before I explain the education point. The first Yeah. one is what Ma'am Balmiki just said. There is God, paths are different. The ways in which we reach God is different. That's the different religions. I'd also like to make a quote before I go into what I would explain about education, which comes from the Bible. Jesus said, love of God and love of neighbor. I'm sure that everybody knows this because this is one of the most quoted sayings of Jesus. We cannot love God without loving our neighbor. And that is something which is very, very important for all of us in all our religions. And therefore, even when we look at another person as different, we still love that person and we try to work with that person. Coming to the point of education, education is increasing by leaps and bounds all over the country. Everybody wants education. Everybody knows the value of education. I'm here in one place. The others are in different places. It's happened because of the progress in education where we have reached this level of technology. What education should do is also educate people to think critically. It's not just to think, because otherwise it becomes knowledge. I can give you a lot of knowledge. You can be a fantastic computer programmer, but you will not be able to innovate if you're not able to think in a different way. To think critically that I can do something a little different and therefore I can think a little differently. Enabling the youngsters of today through education would bring an awareness in their understanding to look at issues of religion, and then it brings in these questions of diversity, intolerance, factionalism, lack of development, the caste system, the class system, women, men, various aspects of these, and to see what is really good about it and what are the things which require to be growing edges, which maybe we need to let go of or which we need to then work on so that we understand what the situation is with everyone. True. That's absolutely right and true. प्रोफेसर हमीद नसीम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगेन हम लोग इंटर रिलीजियस डायलॉग्स की बात कर रहे हैं। डॉक्टर खुरनाड जैसे बता रहे हैं कि एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। किसी से बात करना है, किसी को समझाना है। जब हम लोग किसी भी बच्चे से या बुजुर्ग से बात करते हैं, हम एक साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, रियल लाइफ के सिनेरियोस को समझाते हैं। क्या रिलिजन भी एक साइंटिफिक अप्रोच से समझाया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं? मतलब देखिए, असल में मज़हबी ने तो साइंस सिखाया है। जब तक मज़हब नहीं था तो कोई साइंस नहीं था दुनिया में। तो पहली रोशनी जो दुनिया में आई है वो मज़हब की वजह से आई। बल्कि अगर आप बाइबल में देखें, तो लेट द होल एक्सपेंसेस में बी फिल्ड विद लाइट। So this is also found in the Zoroastrian religion, that is Sandelista, and Allahu Nur Samawat wal Ard, that Allah is the light of day, this heavens and earth. So every light has come from religion. So, but if religion is used for non-religious purposes, then it becomes darkness. So we need to use religion for the purpose which was sent for by God. And we believe as Muslims that all the communities have received divine message from God. And there have been numberless prophets who came to different parts of the world, and they preached the same message of peace and love and affection. So in this way,
religion is very scientific, religion is very rational, and if it becomes superstitious, or it becomes just based on ignorance and hatred, then it ceases to be religion. Religion has to be always for goodness. Religion has to be always for peace. And even the name of Islam means peace. In the same way, we have Sanatana Dharma. That's the very oldest religion of the world. And Om Shanti Shanti, that's one of the very important chanting. And then also in Christianity, love thy neighbor as thyself. And in the same way, Sikhism also, Sabka Malik Ek hai. Awal Allah Noor Paya Kudrat Sab Bande. Ek Noor se Sab Jag Ujjiya Koon Bale Koon Mande. So this is the message, and you take any religion of the world, they preach the same, gospel of truth. But the problem is religion is being used for non-religious purposes, and that is the problem. And we need to arrest that, tendency, and let us impress upon the people who follow religions that they should take from religion spiritual values, ethical values, and peaceful values, and they should use religion for the purpose so that our world becomes a peaceful place, as was today mentioned by Shri Ravi Shankar, that we are in this world for only few days, few years. Let us make this world beautiful and let us make it worth living. But we have made it hell nowadays. Even he mentioned about that. So in this way, religion is scientific in that way. It is rational also, and it has to be rational. And if there is no rationality in religion, then irrational behavior will take us to such type of, I should say, levels of aggressiveness and hatred against each other. True. That is the way forward when we talk about, coexistence. डॉक्टर अमिता वाल्मीकि, मैं आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर साहिबा, बोलिए। जब हम डायलॉग की बात कर रहे हैं, जैसे आपका टॉपिक है आज का, नीड फॉर इंटर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रमोटिंग पीस एंड हार्मनी। ये सवाल है, जैसे कि प्रोफेसर हमीद नसीम ने पहले बोला कि मज़हब ही हमें सब कुछ सिखाता है, मगर मज़हब पे ही सवाल उठना शुरू हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? Why do we need to have this dialogue at this point of time? देखिए, religion has become, instead of becoming a force of bringing people together, it is being used by some ill heads to divide people. And it is a right time and a right time as well that we come together and see that this doesn't happen. And you have to, as I told you have to enter in the realm of dialogue. ये पीस मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए जैसे मैंने पहले भी बताया था कि विसल ब्लोअर, ये वर्ड बहुत नेगेटिवली यूज हुआ जाता है, लेकिन ऐसे कॉन्फ्रेंसेस विसल ब्लोअर का काम करते हैं जहाँ पे वो लोगों की आंखें खोलने पर मजबूर करते हैं उनको कि जरा पहले देखो, अपने आंखों के सामने जो मिस्ट छाया हुआ है, जो फॉग छाया हुआ है, उसे निकालो और क्लियरली देखो वर्ल्ड क्या है और कितनी खूबसूरती और कितनी प्योरिटी वर्ल्ड में है। पर जब तक ये एहसास नहीं होता, तब तक हमारा रिलीजन बेस्ट है और पीस एस्टैब्लिश करना नामुमकिन हो जाएगा, और यही बात रहेगी, वी आर द बेस्ट। सो इम्पोर्टेंट है कि हम ये बात को हमें वायलेंटली नहीं, मसला है कि ट्रांसेंड करना है। वी हैव टू गो ऑन द असेंडिंग लैडर so that there is peace and harmony, and this is built. And see, once you are watching or once you are observing from a magnifying glass, you realize religions divide का force हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, नैतिक प्रिंसिपल्स जो है, नैतिक सिद्धांत जो है, मॉरल प्रिंसिपल्स है, सभी रिलीजन के सेम ही कहते हैं। मैंने कुरान पढ़ी है, मैं बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ रही हूँ, मैं बाइबल की तरफ मूव कर रही हूँ, न्यू टेस्टामेंट की तरफ। मुझे रियलाइज होता है, और ज़ोरास्ट्रियनिज्म कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाए हैं, तो सभी रिलीजन का काफी नॉलेज रखते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा ये फर्ज था कि एज ए टीचर हमें सभी रिलीजन्स का नॉलेज हो। और कहीं पे भी कोई भी रिलीजन में दंगा फसाद करो या किसी को मारो या किसी के ऊपर हाथ उठाओ, ये हक नहीं दिया है खुदा ने। So we have to realize that we have to, this is the right time, and ये जो कुछ दिमाग रहे हैं to divide people and rule people,
We have to eradicate that. ये मकसद होना चाहिए. True, true. You're absolutely right about that. Dr. Conrad, I'll ask you the question now. जब हम बात कर रहे हैं अगेन पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, हार्मनी की बात हो रही है, डायलॉग की बात हो रही है, डायलेक्ट की बात हो रही है, जैसे कि हमें प्रोफेसर अमिता वाल्मीकि बता रही हैं कि जब वो पढ़ रही हैं तो उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट शुरू किया है, कुरान पढ़ चुकी हैं, गीता पढ़ चुकी हैं। सो एक बुक का सेंस सेंस वही है कि पीस में इंसान परवाह करे, भाईचारा रहे, अमन रहे, आपस में डायलॉग हो सके। तो फिर दिक्कत कहाँ पे आती है? आप अगर डील करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जब आप बात करने की कोशिश करते हैं, क्या मसला वही है कि हमारे पढ़ाने में या स्टूडेंट्स के समझने में दिक्कत आ रही है? वेयर इज़ द डिस्कनेक्ट? I'll get back to that point where I was talking about critical thinking. And I would also like to point out something about development. There is development which occurs physically, there is development which occurs emotionally, there is development which occurs spiritually, as we all know in our growth. And it's not necessary that someone who's older is more spiritual than a person who's younger. These are things which which happen in people. So when a small child in its intellectual development, where it listens, to what daddy and mummy says and consider what daddy and mummy says as blanket truth, if Yeah. at that time something is planted in the child's mind which is divisive, then that will retain in the child's mind till the child begins to understand later on through an unlearning of the process of what wrong has been planted in that child's mind. And that is where I bring in the very important factor of how self-awareness and the ability to look at oneself and say, this starts with me. It's only when one person, like we are doing, or we are four people over here, we are talking about it, and I don't know how many are listening. But if everyone who's over there says that this starts with me, there probably would also be people who are listening to this program who says, no, they are the other. So Yeah. therefore, let us listen to ourselves and see what it says, because all of us are mouthing the fact that we come from different faiths. Because we come from different faiths, it does not make us different. We're all saying that universal principles are the same, values are the same. There is God, and there are different paths to meet God. So, how about I looking at myself and seeing whether what I'm doing is right or whether what I'm doing is wrong, or whether I have been conditioned through various processes to do something which is not right, which later on, I might, let's say, to use a very spiritual word, I might repent. But even that is something which can help a person move forward, help systems to move forward. To use a managerial principle, systems only work as well as the people in the system work. And if the Yes. people in the system are understanding of each other and understanding of the other, there is a whole movement towards betterment. And here I'm talking about not the differences, even within groups, where there are divisions. So when the system understands each other, then everything moves forward, and people will look at each other really as different, but at the same time, yes, there is that person is my brother or sister. Yes, I absolutely agree with the fact that the respect comes from within, and at the same time जब हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं बेहतर हूँ दूसरा नहीं, वहां पे डिस्कनेक्ट हो जाता है. I'm loving the fact that four of us are here, all of us sitting at different places, all of us looking different. मेरी शक्ल देख के कोई बोलेगा कि मुसलमान है, प्रोफेसर नसीम है मुसलमान है, डॉक्टर अमिता is there, she's a Hindu, you are a Christian, you're a father. But again, the language we are using, the communication we have is the same. We all want peace. We all want humanity. We all want our endeavor to prosper. जैसे आप कह रहे हैं कि कितने लोग सुनेंगे, and the process of unlearning. I remember, I mean, I should not be talking much about myself because I'm the host, but I remember when I was a child, I was raised in a Catholic school, and I would go to the church and baptize myself every morning. And somebody asked my father, why does she do that? She's a Muslim child. My father said, she's a child, she's a human first. Let her become a human, let her choose what she wants to be. I've read Gita, I've read the Bible, the Old and New Testament both, I've read Quran, and nowhere does it teach you to dispel the thought of other people.
Nowhere, no religion tells you to disrespect the other person, right? This is what we are talking about. प्रोफेसर हमीद नसीम साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जब हम लोग कॉलेज लेवल पे जा रहे हैं, जैसे फादर बोल रहे हैं, डॉक्टर कनराड बोल रहे हैं कि बड़े होके हमें अनलर्न करना पड़ता है। एज एन इंस्टीट्यूट, एज अ प्रोफेसर, एज अ पेरेंट, व्हाट डू यू थिंक हमारा प्रैक्टिस क्या रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों को पीस सिखाएं? ये इंटर रिलीजियस डिस्कशंस जो होनी चाहिए, सिर्फ कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे साल में एक बार नहीं होनी चाहिए। एज अ पेरेंट, व्हाट शुड वी टेल आवर स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रन दैट वी टीच? अगर आप उसके बारे में बताएं। आपका माइक म्यूट है डॉक्टर प्रोफेसर हमीद नसीम, अगर आप माइक अनम्यूट कर सकें। प्रोफेसर हमीद, आपका माइक म्यूट आ रहा है, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकें। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रोफेसर हमीद। या आप Am I audible now? यस, यू आर ऑडिबल, प्लीज। Yeah, basically, I think that we need to teach our children about other religions also, because as has been said by Max Muller, to know one religion is to know nothing. So unless and until we know other religions, we will never be sensible about their sensibilities. All the problem is arises because of being not sensitive to the religious feelings of others. And such type of propaganda, such type of campaign is being launched against other religions, and people do care what will happen to the feelings of other people when we use very abusive language about others. And this has become आपकी आवाज फिर से कट रही है प्रोफेसर हमीद। I don't know, there's something wrong with his network. Dr. Amita, if you could answer this question for me. मेरे ख्याल में जब तक हम बच्चों को कंपैरेटिव रिलीजन नहीं पढ़ाएंगे, दूसरे मजहब नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ एक मजहब पढ़ाएंगे, तो बच्चों के जहन में हम कभी जो है दूसरे मजहब का एहतराम पैदा नहीं कर सकते हैं। और इस तरह की जो है गैर जिंदारा बातें लोग बयान करेंगे, उससे फसाद पैदा होगा, लड़ाई पैदा होगा, झगड़ा पैदा होगा, और कभी तक आज कोई मसला पैदा नहीं हुआ। उन्होंने जी ने कहा है कि अगर कोई कांटा दिखाता है और कांटे मत बिछाओ, वरना कांटे कांटे चारों तरफ हो जाएंगे। इसलिए मोहब्बत की जबान बच्चों को सिखानी पड़ेगी हमें, और सूरत ये है कि हम उसको दूसरे मज़ाहिब पढ़ाएं। जी, जब हम लोग यही बात कर रहे हैं, जैसे आपकी जो कॉन्फ्रेंस है, ये नेशनल स्तर पे हो रही है? डॉक्टर अमिता, अगर आप ये आंसर कर सकें, प्रोफेसर हमीद इज ऑन अ कॉल। ये इंटरनेशनल स्तर पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, कितने कितने कंट्रीज से, कितने ममालिक से लोग आए हैं इसमें, और व्हाट इज योर वर्क प्लान ऑफ एक्शन फॉर दिस कॉन्फ्रेंस? आपका आवाज म्यूट हो गया फिर से। Your voice is muted. I'm sorry, I can't hear you. Professor You Amita, can't- if you could, yes, I can hear you Hello, now. I can can you hear you. hear me now? Yes. I'm unmute. I'm unmuted. Can Yeah, you please hear go me ahead. now? Yes, Okay. please go ahead. As I was telling you, there are many countries participating. More than 6 countries are there, and it is really time for celebration. You know, diversity can never be the force for separation. Diversity needs to be celebrated. And as I remember, Dr. Asghar Ali, engineer, used to say that let us celebrate the diversity. And this celebration brings us together. I talking to my Muslim friend, Professor Tabassum Sheikh or Professor Hamidullah. I'm not feeling that, or Father Conrad. I feel that I'm talking to people who are on the same platform, on the same pedestal, and there is no distinction between us. And this gives a cause for celebration. I don't know how religion is being used to divide people. I have no idea, and how people can go fanatic. This is absolutely beyond my understanding. So, like Kali Jasper says, a German philosopher, that you need to have a dialogical communication and see that you renew your faith again and again. Your faith has to be renewed. Has to be repetition of your faith. Renew your faith again and again, and you realize the others are not outside there. They are with you. They are part of you. So this element has to be revived.
जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपका आपका वक़्त देने के लिए। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल कि हमें डायलॉग बहुत ज़रूरी है और सेलिब्रेट करना चाहिए अपना डाइवर्सिटी दैट वी शेयर सेम माइंड, मेंटल पीस हम लोगों का एक जैसा है। चाहे मेरा नाम अमिता है या आपका नाम अमिता है या आपका नाम बीनिश है, मेरा नाम बीनिश है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम नहीं सब पड़ता। इंसान हैं, हम सब मनुष्य हैं और जब हम Absolutely. Humanity एक-दूसरे first. रिस्पेक्ट करेंगे that is what matters. Professor Conrad, I would want to conclude this program with you. I would want you to tell me एक सवाल भी आया था हमारे नाज़रीन की तरफ से. Interfaith dialogue for peaceful coexistence is imperative. How do you see that? How imperative is that? I question. Yeah, very often the focus seems to be disharmony. What I think the focus should be is amity. You know, that there are people who are living together, working together, doing everything together, sharing the same food, going to the same school, going to the same market, and that in the maintenance of anything, there has to be an ongoing commitment, because there will be differences which will come up which can create issues. So, an ongoing commitment to peace, dialogue, would result, therefore, in harmony. So, it's not a one time thing, it has to be an ongoing thing. When this realization happens that yes, there are most of the country, as far as I know, most of the people that I have met talk about how wonderful it is to live together. And in the Western world, where I have also lived, they actually have asked me this: how do you all live together? You're all so different, you're all so colorful. And they used to comment on my clothes, because there it's mainly grays and blacks and whites, whereas I used to wear colorful shirts and trousers. So they would say, how do you all live together? So that beauty is something which a country like India conveys to the whole world. But that is an ongoing commitment. And for this amity, that should be focused on. That yes, we have a Hindu, a Muslim, and a Christian here talking together and sharing the same viewpoints, and we are different, at least from the faith perspective. Thank you. Absolutely. Absolutely. It was wonderful having you all here and having a conversation with you. जैसे आप लोग बहुत खूबसूरती से बता रहे हैं कि हम सब का एक जैसे हम सब एक ही जैसे हैं। हमारे अंदर का खून एक है, स्किन का कलर एक जैसा है, थोड़ा-सा मेकअप से इधर-उधर हो सकता है। आई वुड नॉट से दैट कैमरा लाइटनिंग इफेक्ट हो सकते हैं। बट अगेन अंदर से हम लोग इंसान वही हैं। अगर किसी का भी बच्चा रो रहा होगा, मुझे लगता है हम तीनों इकट्ठे लपक के उस बच्चे को देखेंगे विदाउट जजिंग एंड आस्किंग ये हिंदू का बच्चा है, ये मुसलमान का बच्चा है, ये क्रिश्चियन का बच्चा है। बड़े होके हम लोगों में ये इत्तेफ़ाक क्यों नहीं रहता है कि हम लोग इंसान के लिबास से, भेष नो भे भाषा या भेष से देख के समझते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या हो गया। So probably that is what we need to work on and have dialogues and conversations. All the best to you all for your program Thank you tomorrow so also. much. I will really request you to please be with us sometime again and honor us with more delightful insights about peace, harmony, and religion. That is humanity, I would Our say. honor. Our honor. Thank you Thank you very so much. much. Thank you so much. RNA की टीम की तरफ से शुक्रिया, आदाब। नाज़रीन ये थे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे गेस्ट मुंबई से लाइव और ये हमें बता रहे थे कि इनकी कॉन्फ्रेंस है इंटररिलीजियस हार्मनी और व्हाट इज़ द वे पीस forward to peace. प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ियाबादी जो कि कश्मीर से हैं, प्रोफेसर अमिता वाल्मीकि जो कि मुंबई से हैं, प्रोफेसर तबस्सुम शेख कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शी कुड नॉट जॉइन अस, डॉक्टर कॉनराड नोराना वो भी मुंबई से हैं और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोग बहुत ही ममालिक से, बहुत ही शहरों से जुड़े हैं और बहुत से रिलिजन से बात कर रहे हैं। बात करना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई भी शिकवा हो, गिला हो, बात करने से सुलझाया जा सकता है एंड आई एम श्योर एट द एंड ऑफ द डे हम सबको मालूम है कि हम इंसान हैं। रंग, लिबास बदल सकता है, बदला जा सकता है, मगर अंदर से दिल वही है, आपकी मुट्ठी के साइज़ का दिल है, खून भी वही बहता है, ज़ुबान हमारी हिंदुस्तानी और मोहब्बत की है। उम्मीद है कि ये नशरियात आपको पसंद आई होंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ये बताते रहिए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। हमारा सिस्टर कंसर्न द कश्मीर क्लैरियन उस पे भी जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी किसी नए मौज़ू पे, किसी नए गेस्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।